Hello, friends. Now, today I am going to discuss another topic of business communication. Unit first topic is 7 C's of effective communication. This is basically not given in the syllabus, but it is important for when we study the business communication. American professor Frank Groves and Richard Wilstrup give the 7 C's of communication. These are the first one is clarity, second is content, third is credibility, fourth is context, fifth is consistency or continuity, sixth channel, seventh is capability of audience. So basically, these are the 7 C's of communication. So one by one, we discuss I want to discuss with you. The first one is clarity. So clarity basically that means when we send a message or when we put a message, it should be in simple terms. Word must be mean the same things and to the receiver as they do not do to the senders. So basically, what we send to the receiver, so receivers is capable to understand the terms. Basically, it is also known as clarity and the further a message has to travel the simple it and it must be simple when we send the message when we the same message is traveled, so it should be simple or it must be simple, we can say then. And an institution must speak with one voice, not many voices also. So this is the main important thing in the organization. Sometimes we see that the top level or mid level subordinate and other things. So different kinds of levels are there in the financial institution or in the other institution on the government organization, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. तो समटाइम्स ये देखा जाता है कि कुछ लोग टॉप लेवल में कुछ ऑर्डर्स देते हैं, उससे नीचे वाला कुछ और उसको चेंज कर देता है या कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो इट इज़ नॉट गुड इन प्रैक्टिस. तो क्लैरिटी इज़ मस्ट. जब भी हम कम्युनिकेशन में कोई भी टर्म्स यूज करते हैं तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. क्लैरिटी के कारण ही हम चीज़ों को आगे समझ सकते हैं और ये इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द interested parties who are interested in our organization. Second point is contents. It is also known as content. Content basically the message content. Message content must have the meaning for receiver and it must be capable or capable compatible with his value systems also. So contents should be good or it should be in terms of relevance, in terms of clarity, in terms of capabilities, and receiver should be able to understand the contents. So it must have relevance to him also. So that's why in general people select those items of information which promise them generates the rewards. तो बेसिकली बहुत जगह ये देखा जाता है कि लोग मैसेज तो करते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. अगर हम बात करें तो इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम. तो इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आप बहुत सारी जगह हम लोग देखते हैं कि इनका एडवर्टीजमेंट में आपको चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, जब कि ऐसा कई जगह ऐसा देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता है. तो उसको ध्यान में रखना है. कंटेंट्स जो है आपके अच्छे होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए, रिलेवेंस होने चाहिए, अनरिलेवेंट मैटर या टर्म्स उसमें नहीं रखने चाहिए. अनदर इज क्रेडिबिलिटी. तो बेसिकली क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट स्टार्ट्स विद दैट क्लाइमेट ऑफ बिलीव्स and this is built by the performance on the part of the sources. So credibility is start with the beliefs start with the right communication between the parties. And when we communicate each other in terms of business, in terms of other relation, informal or informal, in both terms formal or informal also. So credibility is having an important playing an important role. So credibility creates when we provide the valuable terms like if you need something and if you do the work for the others and like some rewards and other etc, and like some sales promotion activities and other things. So if you present in terms of advertisement but you will not provided them the customers also. So credibility is
इम्पोर्टेंट थिंग। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो क्रेडिबिलिटी को क्रिएट करना होता है, क्रेडिबिलिटी ज़रूरी है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। एंड ही मस्ट हैव हाई रिगार्ड्स फॉर द सोर्सेज competence on the subject also. And other fourth one is context. Basically communication program must require with the realities of environment, and the context must provide for participation and playback. The context must confirm, not contradict the message. कॉन्टेक्स्ट मीन्स द कॉन्टेक्ट, दैट मीन्स जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट जो है आपका वो कंफर्म होना चाहिए, नॉट कॉन्ट्राडिक्ट। मीन्स ऐसे टर्म्स यूज करने चाहिए जो बेसिकली हमारे बीच के अच्छे रिलेशंस को डेवलप कर सकते हैं, ना कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट यूज करने चाहिए जो कम्युनिकेशन में जो कि आपके रिलेशंस को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं या चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ही हमें बात करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ही हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। अनरिलेटेड आइटम्स, अनरिलेटेड टर्म्स को अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो समटाइम्स इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। And other is fifth point, it is consistency, or it is also known as continuity. So basically consistency and continuity in it is an unending process in a communication, and it requires the repetition to achieve penetration. The story must be consist. तो ये ध्यान रखना है कि बिकॉज द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अनएंडिंग प्रोसेस, एंड it is a two-way process also, as you know that it is a two-way process, because one is a sender, another is a receiver, and receiver again it is a sender, and then sender is a receiver. So this is the terms in terms of business communication and other things. First we send the letters to the interested parties, and then he receive and understand and then reply us. So this is a continuous process, getting feedback and other things. So consistency is necessary, and it is also is able to understand the understanding with each others and other things, and continuity is must for the ऑक्सीजन। द स्टोरी मस्ट बी कंसिस्टेंट। तो जो भी हम कह रहे हैं वो कंसिस्टेंटली कहा जाना चाहिए, उसमें कोई भी हेर फेर या इधर उधर से बढ़ा चढ़ा कर नहीं होना चाहिए। And sixth one is channels basically the mediums by which we communicate. So there are different kinds of channels which we use in terms of communication, like electronic media, print media, and other terms like nowadays WhatsApp and other communication terms. So all the channels should be used channel which the receivers uses in respect. तो बेसिकली चैनल्स वही यूज करने चाहिए जो दूसरा पर्सन भी यूज कर रहा है। लाइक आप तो चैनल्स यूज करते हैं, लाइक आपने कहा कि हम व्हाट्सएप यूज़ करें, बट दूसरे व्यक्ति के पास वो व्हाट्सएप का मोबाइल ही नहीं है, उसके बाद वो व्हाट्सएप यूज रिसीव करे, तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, तो उनको दूर करना चाहिए। 7 C's में चैनल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो जब भी हम कम्युनिकेट करें कोशिश करें कि जो चैनल हमारे पास है दूसरे के पास भी वो चैनल हो, दैट मीन्स it is good for the health of the organization also, and individual for sometimes different channels have different effects and serves in different stages of the diffusion of process also. And last one is capabilities of audience. This is the another important aspect or seventh C of the communication must take into account the capability of audience also. Communication are most effective when they are required the least efforts on the part of recipient. ये ध्यान रखना होगा हमेशा कि जब भी हम कम्युनिकेट करें तो जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे रिसिपेंट हैं, उनको कम से कम एफर्ट्स में वो ज़्यादा अच्छे मैसेज उनको मिल जाने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं दैट मीन्स कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है जो कम्युनिकेशन करने की वो ज़्यादा इफेक्टिव है और हम अपने ऑडियंस को ज़्यादा अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो keep in mind all these things. So these are the important 7 C's of the communication, and as a manager or as a students and like business management and other things and other organization, so communication have play an important role in all terms, like in terms of finance, in terms of production. So all the activities basically it is important for the organization also, it is important for the interested parties also, it is important for the audience and customers also. So
ऑन द all the points अगर हम देखें तो communication is must. And 7 C's, if you if you have these 7 C's in your minds and at the time of communication, then it is good for the health of the organization and you also. Thank you and keep